कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल केएलएफ कलिंग साहित्य महोत्सव द्वादश संस्करण भुवनेश्वर मे फेयर कन्वेंशन ठारे आनुष्ठानिक भाव उद्घाटित हो जाइछि। जहाँ साहित्य विचारधारा कला द्विपाक्षिक सांस्कृतिक आलोचनार एक 4 दिवसीय संगमर आरंभ को चिन्हित करुछि। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय एवं ओडिशा सरकार द्वारा समर्थित यह महोत्सव दक्षिण एशिया बौद्धिक और सांस्कृतिक योगदान पर एक अग्रणी केन्द्र भाव भुवनेश्वर प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करिछि। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିଭାଜନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଏକାଠି କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ସହ ଜଡ଼ିତ ନ୍ୟାୟ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସମାନ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିବାରୁ କେଏଲ୍ଏଫ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଧ୍ରୁବୀକରଣର ଯୁଗରେ ସାହିତ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ବିଚାରଧାରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନକୁ ସଶକ୍ତ କରୁଛି। साहित्यर गणतांत्रिक भूमिका को हाइलाइट कर राज्यसभा उपाध्यक्ष श्री हरिवंश नारायण सिंह कहते साहित्य समालोचनामूलक आलोचना और नैतिक प्रतिफलन को प्रतिपोषण करें। केएलएफ एक सार्थक मंचरे विकसित होइछि, जोठारे भारतीय अंतर्जातीय स्वरगुड़िक आमर सामूहिक भविष्य को रूप देउथिबा विचारधारा गुड़िक नियोजित होउछन्ति। सेपरि सीमापार सांस्कृतिक योगदान उपरे महत्व दे श्रीलंकार माननीय मंत्री डॉक्टर उपाली पनिलजे कहते केएलएफ भली महोत्सव गुड़िक दक्षिण एशिया लोकमानक मध्य संयोग को गभीर करुछि। साहित्य राजनीतिक सीमा को अतिक्रम करिଥାଏ एवं देशगुड़िक मिलित इतिहास आकांक्षा को पुनः आविष्कार करिबारे साहाय्य करिଥାଏ। महोत्सव ओडिशा सरकार को ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते ओडिशा हेउछि सेही राज्य जोठारे खंडा चेतना आकार मुंड नुआई थाए। एक समाज केवल सीमेंट नुहे बरं चेतना विवेक आधार में गठन होता है। साहित्य यार रक्षक अटे। एआईर जुगरे साहित्य मानविक बुद्धि शक्तिर प्रकृत परिमाप भाव निजर स्थान बजाय रखिछि। ए विरासता को सम्मान जणाइबा पई आमे लक्ष्य विरल पांडुलिपिर डिजिटालीकरण करिछु एवं लेखकों पई नुआ फिलोसफी लॉन्च करिछु। आमर लक्ष्य होछि ओडिशा को भारतर बौद्धिक राजनीति परिणत करिबा। लोकप्रिय लेखिका और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर प्रतिभा राय उल्लेख करथिले जे साहित्य होछि समाजर विवेक। युवा लेखक विविध कहानी उपरे केएलएफर महत्व निश्चित करिछि जे विवेक उत्साहपूर्ण समावेश प्रश्नवाची रहिछि। महोत्सवर दृष्टिकोण उपरे मत व्यक्त करी केएलएफर सीईओ पृष्ठपोषक श्री अशोक कुमार बल कहते केएलएफ को एभली एक मंच भाव परिकल्पना करा जायतिला जोंठारे साहित्य समसामयिक वास्तवता और भविष्यतर संभावना सहित जड़ित होता है। विगत वर्ष गुड़िक एक अंतर्जातीय फोरम भाव विकसित होइछि, जहाँ संस्कृति भाषा और विचारधारा को संयोग करने सह ओडिशार भौतिक परंपरा गुड़िक गभीर भाव जड़ित रहिछि। महोत्सवर यात्रा संपर्क में उल्लेख कर केएलएफ प्रतिष्ठाता और निर्देशक श्री रश्मिरंजन परिड़ा कहते केएलएफ पछरे उद्देश्य सबुबले भाषा राष्ट्र विषयगुड़िक मध्य रही प्रतिबंधक भांगिबा थिला। ए द्वादश संस्करण आमर विश्वास को सुदृढ़ करिछि जे साहित्य एक जटिल दुनिया रे आलोचना समानुभूति और सूचित नागरिकों को रूप दे पारिबो। ए उद्घाटनी समारोह में डॉक्टर विनोद चौधरी मेड इन नेपाल एवं श्री अशोक कुमार बल सामन चंद्रशेखर पत्रावली पुस्तक समेत उल्लेखनीय पुस्तक गुड़िकर उन्मोचन अंतर्भुक्त थिला। समारोह समय अनेक प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करा जायतिला, जोंथरे डॉक्टर विनोद चौधरी को कलिंग इंटरनेशनल लिविंग लेजेंड अवार्ड, श्री अच्युतानंद पति को कलिंग लिटरेरी अवार्ड, डेजी रॉकवेल को कलिंग इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड, रंजना नौरला को कलिंग लिटरेरी अवार्ड युव लेखक, पंडित हरमोन खंटिया और श्री गोवर्धन दोरा को ओडिशा लिविंग लेजेंड अवार्ड अंतर्भुक्त करथिला। एथिसहित केएलएफ पेंगुइन रिव्यू प्रोजेक्ट अवार्ड और केएलएफ संवाद बुक रिव्यू अवार्ड प्रदान कर महोत्सव में विशिष्ट अतिथि मध्य श्रीलंकार ग्रामांचल विकास सामाजिक सुरक्षा समुदाय सशक्तिकरण मंत्री डॉक्टर उपाली पनिलजे, शिल्पपति समाजसेवी डॉक्टर सोमरंजन सामल एवं संवाद ग्रुपर कार्यकारी निर्देशक तनय पट्टनायक प्रमुख जोग कलिंग साहित्य महोत्सव सीईओ पृष्ठपोषक श्री अशोक कुमार बल और केएलएफ प्रतिष्ठाता और निर्देशक श्री रश्मिरंजन परिड़ा समारोह नेतृत्व देते। सीमा बिना साहित्य दृष्टिकोण सहित स्थापित कलिंग साहित्य महोत्सव 2026 वार्ता पठन प्रदर्शन कलाभित्तिक आलोचना माध्यम भारत और विदेशर वो विशिष्ट लेखक नीति निर्माता कूटनीतिज्ञ कलाकार चिंताकारी को एकाठी करिछि। यह महोत्सव आसंता जनवरी 11 तारिख 2026 पर्यंत जारी रहब, जहाँ अंतर्जातीय मंच में आधुनिक साहित्य संस्कृति और भौतिक आलोचना को नुआ रूप देबारे ओडिशार भूमिका को आहुरी सुदृढ़ करिब। A developed society is built not just on the concrete, but on the consciousness. Literature is the custodian of their soul.
In an era which is dominated by AI, literature remains our most ancient technology for transformation and the true measure of our human intelligence. Think of Kuntala Kumari Sabha. She did not wield a gun, she wielded a pen, igniting the fire of patriotism and proving that the written word prepares the citizens for the responsibilities of freedom. Odisha possesses one of the world's great literary traditions, from Sarala Das to Jagannath Das. To honor this legacy, our government is committed for digitizing lakhs of rare palm leaves, manuscripts to save our ancestral wisdom and ensuring the world recognizes masterpieces like Fakir Mohan Senapati's Shaumana Atho Guntha. Our government is committed to launch new fellowships for young writers and linguistic researchers. The theme of this festival is decolonizing literature. It reminds us to embrace our root. The future of literature will be hybrid and democratized, involving digital podcasters. Our institutions are in the process of adapting to support these new literary workers. To the writers and thinkers across the world, here I must tell, this government builds the infrastructure, but you build the soul of the society. By 2036, our vision for Odisha is to be the intellectual capital of India. समस्ते जो मैंने उपस्थित अच्छा अनुरोध करी ये तमाम 12 वर्षर कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल जो भाव में प्रयास प्रचेषा एवं पराकाष्ठा प्रदर्शन कर समस्ते से गोटे करताली माध्यम उत्साहित करवा एवं कलिंगर कथा केतोटी मिनिट भितर कहवा पाखापाखि असंभव आम एमती गोटे पुण्य माटी रे आज दंडायमान अच्छा जो माटी रे पुरुषोत्तम देव के समय प्रतापरुद्र देव के समय कपिलेन्द्र देव के समय शिक्षा बा लिटरेसी रेट जहाँ को आज दिन में कहते 100% थिला ओडिशार घरे घरे भागवत पढ़ा जाता एवं भागवत को आमूलचूल पढ़ुवा गोटे समाज आज जिते शिक्षा क्षेत्र में साहित्य क्षेत्र में आम क्यों स्थान अच्छा अतीत में क्यों स्थान में वर्तमान निजक अनुशीलन करने दरकार तेबे जाइकी विकसित ओडिशार जो नील नक्शा अच्छी निश्चित भाव में समापित एवं संपादित हेब बोली मु आशा प्रकट करुच्ची एवं कलिंग साहित्य महोत्सव एथिरे गोटे बड़ योगदान एवं अवदान देव आज दिन में प्रभु जगन्नाथ निकट में एति प्रार्थना एति कामना वंदे उत्कल जननी भारत माता। Print and electronic media, ladies and gentlemen, on behalf of KLF, I extend to all of you a very warm welcome to its 12th edition. I deem it an immense privilege and a great honor to welcome our distinguished guests to this beautiful temple city of Bhubaneswar and sincerely hope that their stay here will be rewarding and memorable. Your presence has lent lustre to this event and inspires us to take this festival to a greater height in future. We need your support, patronage, goodwill, advice, cooperation to accomplish this task. The confluence of dignitaries on the dais reminds me of a very special characteristic. At the outset, I bow in deep respect
to our Honorable Chief Guest, Sri Kanakvardhan Singh Devji, whose leadership embodies a rare blend of tradition and transformation, and whose presence this evening gives profound strength to the idea that culture or literature is not peripheral to governance. It is central to it. Sir, your presence tells us that development is incomplete without dignity and progress is hollow without cultural confidence. I extend my heartfelt gratitude to our distinguished guest of honor, to Dr. Upali Panilage, joining us from Sri Lanka. Sir, your presence reminds us that South Asia is not a geopolitical expression alone, but a literary and civilizational family. To Suryavanshi Surajji, your stewardship of Odia language and culture ensures and reaffirms that our mother tongues are not inherited passively, but carried forward and cultivated consciously. To Vidot Chaudhary, sir, your journey tells young people that entrepreneurship and philanthropy, like literature, must serve society. Sri Sudarshan Sahuji and Dr. Pratibha Rai, both of you are living libraries of art and literature. Your presence adds luster and dignity to this festival. To Tanaya Patnaik, the youngest and the dynamic editor of the largest circulating newspaper in Odisha, who believes that a newspaper can be an effective medium of spreading art and literature and not necessarily headlines, thus bringing literature closer to the people. Sir, let me begin with a candid confession. When we first dreamt Kalinga Literary Festival, we did not imagine a stage this large, a gathering this diverse, and a movement this significant. We imagined a conversation where languages would not compete, where ideas would not shout, where literature would not be confined to shelves, where culture would not be frozen in museums. We imagined a space where words could walk, where translation could heal, where stories could save humanity. And today, standing before you and standing in Bhubaneswar, the sacred confluence of history, heritage, literature, craft and consciousness, I can say with humility and gratitude that conversation that began in 2014 has now become a movement. Sir, a word about the core values and objectives of KLF will be in order, I suppose. Over the last 12 years, KLF has actively sought to provide a vibrant platform to authors, readers, and the general public for a meaningful exchange of ideas, for promotion of the reading habit, elevating voices, fostering intellectual debates, celebrating linguistic and cultural diversity, and strengthening the foundation of our wonderful inclusive culture and civilization. Sir, our journey. Dignitaries on the dais, Honorable Upali Panilage, Honorable Minister of Rural Development Government of Sri Lanka, Shri Harvansh Rai, Honorable Deputy Speaker Rajya Sabha, my colleague in the government, Shri Suryavanshi Suraj, Honorable Minister for Culture and Sports, Guest of Honor, Dr. Vinod Chaudhary, Member of Parliament from Nepal, Shri Sudarshan Sahu, Padma Vibhushan, awardee, Dr. Pratibha Rai, Gyanpith and Padma Bhushan awardee, Srimati
Tanaya Patnaik, Executive Director, Sambad Group, Dr. Soumya Ranjan Samal, Managing Director, Kalinga Commercial Corporation Limited, Shri Ashok Kumar Bal, Shri Rashmi Ranjan Parida, dignitaries of the dais, ladies and gentlemen, all the dignitaries who have come from the various countries and who are going to be a part of this Kalinga Literary Festival for the next 4 days. On behalf of the state government, I would first like to take this opportunity of welcoming you all to the land of Lord Jagannath. It is a privilege to inaugurate the Kalinga Literary Festival 2026, a platform that has over 12 years established itself as one of India's most credible space for literary and cultural dialogue. I congratulate the entire KLF family for their sustained commitment to creating a forum where ideas can be exchanged with honesty, depth and respect. Literature does not divide, it connects. It reminds us that beneath our differences lies common questions about justice, dignity and purpose. Odisha's civilization experience reflects this truth. From the transformation of Kalinga after the ancient war to our enduring transition in poetry philosophy, this land has consistently chosen reflection over force and dialogue over dominance. I am encouraged that KLF has invited writers from across Orissa, 30 districts from different states and abroad as well, as Orissa moves towards Orissa's 2036 and Viksit Bharat 2047. We must remember that true development requires not infrastructure, but human creativity, cultural confidence and ethical imagination. In today's world of speed and polarization, literature resists oversimplification and restores nuances. It allows us to listen when listening has become difficult. I acknowledge our distinguished guests of honor from Sri Lanka, Australia, Nepal and across India, and congratulate all the awardees and all who have turned up for this festival. May Kalinga Literary Festival continue to inspire the minds, connect cultures and strengthen Odisha's place in the world of ideas. Before I take my seat, I just wanted to make an appeal to all of you present here today. Time and again the compere has been requesting you to put your hands together and give the guests on the dais an ovation that they would remember and carry back when they go back home. Let us not be conducive and give a good thunderous applause to everyone on the dais. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. भुवनेश्वर शिवशंकर सिंह का रिपोर्ट युवा समय।